Good morning students. Class 7 Chapter 16 Data Handling Exercise 16.3. In the previous video we have discussed about that in the midterm syllabus the chapter 16 in which we study only exercise 16.2 in which only basic, mean, median and mode and their formulas. There are formulas based questions and exercise 16.3 complete. In the previous video we have just discussed about formula of mean, median and mode. So एक थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं. What is the formula of mean? What is the formula of mean? Sum of numbers and upon में number of numbers. जो भी नंबर्स आपके पास गिवन होंगे उनका सम और नीचे उन नंबर्स की काउंटिंग. इट इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज मोड. मोड मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द गिवन ऑब्जर्वेशन. जो भी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी, बार बार आएगी, उसे कॉल करेंगे मोड. एंड द लास्ट मीडियन. मीडियन के हमने दो फॉर्म डिस्कस करे थे. मीडियन को मिड वैल्यू कॉल करते हैं. उसके दो फॉर्म डिस्कस करे थे कि अगर एन ओड है यानी कि काउंटिंग ओड है आफ्टर रिटर्न इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर काउंटिंग इज ओड, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन? n plus 1 upon 2 th term. It's mean put the value of n, find out a number. और ये जो पर्टिकुलर टर्म होगी असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद उस टर्म को उसका मीडियन कहलाएगा. और अगर n की वैल्यू इवन है देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन? n अपॉन 2 th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 th टर्म एंड टोटल के अपॉन में 2. सो ये दो फॉर्मूले थे मीडियन के. Now we start exercise 16.3. In the 16.3 there are three topics: to draw a bar graph, to draw a double bar graph and to find out information from a bar graph or double bar graph. Now start 16.3. Question number 1. The number of hours spent by a school going child on various activities on a working day are given below. It's mean जो बच्चा स्कूल से जाने के बाद अपने जो आवर्स हैं, मतलब स्कूल और स्कूल से जाने के बाद वो जो अपने आवर्स हैं वो कहाँ का स्पेंड करता है, ये उसके बारे में दे रखा है. इन द फर्स्ट रो यू कैन सी देयर आर एक्टिविटीज़. देयर आर टोटल 6 एक्टिविटीज़: स्लीप, स्कूल, होमवर्क, प्ले, वॉचिंग टीवी, अदर्स. एंड द सेकेंड रो नंबर ऑफ आवर्स. तो टू ड्रॉ अ बार ग्राफ वी यूज अ ग्राफ पेपर. And in the graph paper, firstly we draw one horizontal line which is x-axis and second horizontal line which is मतलब vertical line which is y-axis, and we put mark at this point where these two lines cross each other to help जिससे कि हम इसको रीड कर पाएँ. Now how can we draw a bar graph? वैसे आप ऑलरेडी क्लास 6 में कर चुके हो, फिर भी we draw horizontal line x-axis and vertical line y-axis and it is the origin. The first row is activity and we show activity on the x-axis. Activity on the x-axis. There are total 6 activities. आप फर्स्ट बॉक्स को छोड़ोगे एंड दिस बॉक्स आपको थोड़ा सा बोल्ड करना है, डार्क करना है. देन दिस बॉक्स ऑल्सो आपको एक एक बॉक्स का गैप छोड़ना है बीच में. टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6. नाउ इन द फर्स्ट बॉक्स वी राइट फर्स्ट एक्टिविटी विच इज स्लीप. सेकेंड एक्टिविटी स्कूल. थर्ड एक्टिविटी होमवर्क. यू राइट द कंप्लीट नेम. Third activity play. Fourth activity play. Fifth activity watching TV. Please you write complete name and third activity others.
On the y-axis we show number of hours. We see that number of hours maximum are 8. So the first rows we indicate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, and it is hours, and it is hours. And now here we write scale. Scale on the x-axis, 1 centimeter is equal to 1 activity, and on the y-axis 1 centimeter is equal to 1 hour. So now it is prepared to draw a bar graph. First activity, there are 7 hours. So we draw a rectangle up to 7. It is a bar graph for this activity. Now school, there are 8 hours. So we draw a rectangle up to 8, but width of the rectangle always same. Third activity, homework, it is 2 hours. Next, play, it is also 2 hours. Watching TV, it is also 2 hours. And other activity is 3 hours. So it is a required bar graph. Note down it. Okay students, question number 2. In the question number 2, the information is given and we have showed the data by a bar graph. So simply you have to draw a bar graph in which 5 months are considered and number of tourists are given. Similarly, you can do also now question number 3, in which also we have to draw a bar graph, and similarly question number 4. Now in the question number 5. In the question number 5, the blood groups of 25 students of a class are as follows. यानी कि यहाँ पर एक क्लास के 25 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप की इंफॉर्मेशन गिवन है. रिप्रेजेंट इट इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड देन मेक अ बार ग्राफ. तो फर्स्टली वी हैव टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. सो वी जस्ट राइट अ हेडिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? जब कोई नंबर बार बार रिपीट होता है उसके लिए शब्द आता है फ्रीक्वेंसी. To draw a frequency distribution table, we always create 3 columns. Always represent, draw 3 columns. Column number 1, column number 2, and column number 3. And number of rows depend on the observation. We observe that in the question there are discussed only 4 blood groups. So we make 4 columns. First column for the 4 rows. And the first row for blood group A, second for blood group B, blood group O and blood group AB. Now heading of the columns. Heading of the mid column always fixed. It is a tally mark. Last we can say frequency or number of students. It's your choice. And the first column heading is depend on the given information, and the given information is related to blood group. So it is blood group. Now we fill the table. First students whose blood group A, so we draw a bar line which represent blood group A. Again blood group O, we draw a bar line which represent blood group O. Blood group B, we draw a bar line which represent blood group B. Blood group A, we draw another bar line which represent blood group A. So we use same procedure and to fill a tally mark. And their countings we call frequency. So just do it. So students, I hope you have done it. Match your working from this, and please note down when we draw 5th bar line for same value, then we draw up as in the form of. It may be inclined line which cut these 4 bar lines. So total counting 8,
7, 5 and 5 and their sum is 25. So it is a frequency distribution table. Now we have to draw its bar graph. We have to draw bar graph like this. First question, it is a blood group and it is a frequency, number of student. I hope you have done it. So please complete it.